such an inspiring session. I believe all of us are inspired hearing the first session of today, and we are hopeful and we are looking forward a session ta ahori interesting kariba, ahori grounded kariba, आम मानकर स्टोरी आम शेयर करिबा आ स्वप्न देखिबा केते इम्पोर्टेंट स्वप्न देखिबा केते दरकार आ स्वप्न को साकार आम केमिति करिबा ताटा सेही कथा आम सुनिबा आम पाखरे जो पैनलिस्ट अछंती वेल starting from a small town dreaming big and making it happen every single day. Like me, all the panelists, all of us, how important it is to believe in the power of dreams. Is it right to dream? छोटो गाँव छोटो सहर रु आसिकी आमे कोन स्वप्न देखिबा ठीक आ स्वप्न को आमे केमिति पूरा करिबा आसंतु से विषय में आज कथा हबा से विषय आमे जानिबा and I'm beyond excited and I look forward to welcoming all the dynamic entrepreneurs who are the son of Odisha, who are born from the soil of Odisha, and I have the honor to be speaking to all of them. Can I have a big round of applause, please? Well, I'm beyond excited, thrilled, nervous, and emotional because जदि मु ओडिशा रे रही कि एते बड़ मीडिया चैनल रे आम मानक स्टोरी मु लोक मानक संगरे मु शेयर करि पारिबी ताटू बड़ सुजोग मु केबे भाबी नथिली प्रभु जगन्नाथ को मु धन्यवाद दउची. I have the most dynamic Mr. Subrat, who has not only started one entrepreneurship, but he has gone back and he's rebuilt his business empire from Viduli to now a successful business and mobility solutions. I have Mr. Arvind Pani, who is the co-founder of Reverie Language Technologies Private Limited. I have Mr. Alok Mishra, who is the co-founder and CTO of Good Meetings. Session आरंभ करिबा पूर्वरु आमे गोटे छोटो कैंडिड कन्वर्सेशन करूथुलु. आमे समस्ते चेष्टा करूचु आम माध्यम रे आम काम माध्यम रे भाषार दूरता आमर रास्तार दूरता आउ आमर कथार दूरता आमे केमिति ब्रिज करि पारिबा. Without any ado, I would like to put the first question to Subrat. You've built incredible business from Viduli to India Net Mobility. What is it all about? Can you please take us through? Thank you, Soni. Hello, everyone. Prathame mu background dawak chahibi. So mo na Subrat kar. Mu Jaspur district ru. Jaspur ru patha padichi ebang schooling karchi Jaspur ru. +2, 11, 12 karchi FM College Baleshwar ru. Engineering karchi Bhopal ru. तापरे मु दुईटी कंपनी काम करछि 2 वर्ष धरी गोटे jabong.com आ गोटे indiamart.com आज प्रोडक्ट मैनेजर. 2014 रे जते बेले मु मो चाकरी 2012 रे मोर पढ़ा सरला 2014 पर्यंत मु चाकरी करथली. 14 रे मु चाकरी छाड़े की निजे गोटे आइडिया ऊपर काम कली. प्रथम मोर आइडिया थिला जे जेमिति आपनकर टेलीविजन मानकरे रेटिंग चले बार केबे दोछि ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया. सो मोर आइडिया थिला जेहेतु डिजिटल वीडियो ग्रो करुछि इंडिया रे आगो को डिजिटाइजेशन हबो डेफिनेटली जो कंटेंट कंज्यूम होछि डिजिटली तो ता पई निश्चित भाव रेटिंग रो आवश्यक रहबो. तो वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जे वीडियो कंटेंट एनालिटिक्स ऊपर से रेटिंग बाहर करथिला. एंड इनफैक्ट जेति कि ब्रॉडकास्टर इंडिया रे ओटीटी ठार नै कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टर सबु आम रेटिंग यूज करथिले. इनफैक्ट आम बात सहित भी काम करथलु. से कंपनी को 8 वर्ष धरी चलेली. आ से कंपनी रे पाखापाखि 250 कर्मचारी थिले. आ 60% आमर कर्मचारी ओडिशा रे थिले. सेटा जो गोटे बड़ा जिनस. आ से कंपनी टी मु नडेर चलौथली. आ कंपनी रे निवेश करथिले अलीबाबा ग्रुप चाइना. आपन जदि सुनिथिबे अलीबाबा इंडिया रे इन्वेस्ट करथिले पेटीएम जोमाटो बिग बास्केट
मो आम कंपनी भी से इन्वेस्ट करते आलीबाबा सहित बेसमर वेंचर पार्टनर टाइम्स इंटरनेट एमती गुड़े इन्वेस्टर थे जेहेतु आम फंडिंग नहीं चाइना रू इंडिया चाइनार जिओ पॉलिटिकल इश्यू रहा 2020 तो बाध्य हो कंपनी को बिक्री कली 2022 रे बिक्री कलापर मु निश्चित भाव चाहूली ओडिशा को फेरबी आशा रे किसी करी तो लास्ट ईयर मु ओडिशा शिफ्ट हेली आउ डेफिनेटली गोटे ड्रीम नहीं कि गोटे स्वप्न नहीं कि शिफ्ट जे जहाँ मुझे करी बाहर बाहर स्टेट रे सेटा मु ओडिशा रे करी ओडिशा रे जॉब क्रिएट करी आउ से बोधे मु आज स्टेज रे थैंक यू सुब्रत बहुत खुशी लगिला आम ओडिशा रु आसिकी ओडिशा पाए आम किछि करि पारुछु आउ जेहेतु आपण कंटेंट उपरे कहले जेहेतु आपण इन्फॉर्मेशन विषय कहले अरविंद मु आपण को पचारिबी यू आर इन द बिजनेस ऑफ लैंग्वेज यू आर हियर टू ब्रिज द गैप of language and how we can create opportunities around it. Can you please take us through and how the journey has been? मोर ना अरविंद मु भुवनेश्वर मु केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 यूनिट 9 रे अच्छी मु सेठी क्लास 12 पर्यंत पढ़ी सेटा मोर ब्रीफ बैकग्राउंड तापर मु 10 वर्ष अलग कॉर्पोरेट्स रे काम करची आउ एंटरप्रेन्योरशिप मुझे स्टार्ट करली आमर कंपनी रेवरी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज भाषा उपरे काम करे तो मुझे आपन को किछिटा जिनस कहबी जो आप रिलेट करें कि प्रॉब्लमटा कौन एक्स CJI से भी कहले लैंग्वेज विषय रे आमर इंडिपेंडेंस है इंडिया रो 1947 रे आगु 200 वर्ष हमको ब्रिटिश से माने रूल करते तो ब्रिटिश तो आमर फिजिकल इंडिपेंडेंस आमर हो गला किंतु ता छड़ा आम एक्चुअली इंडिपेंडेंट होइछि कि आमर मेंटल इंडिपेंडेंस होइछि कि इंग्लिश रू तो मते लागे एंड इट इज अ फैक्ट एक्चुअली कि एपर्यंत भी आमर इंग्लिश रो इन्फ्लुएंस अच्छी तो आमर कंपनी रो विजन होछि लैंग्वेज इक्वालिटी ऑन द इंटरनेट इन इंडिया ता माने मु आपन को गोटे छोटो एग्जांपल देबी आपन जानि परिबे कि जदि न्यूज़पेपर आमे पढ़िबा कि टेलीविजन देखिबा कि रेडियो सुनिबा आमे सेटा को इंग्लिश रे करिया पे चाहिबा कि ओडिया रे करिया पे चाहिबा हमको किछि अलगा करिया पड़िबोनी न्यूज़पेपर आमे हमर न्यूज़पेपर जे सप्लाई करछन तांको आमे कहबा ए एडिशन रा हमको ओडिया न्यूज़पेपर दे दियंतु ए एडिशन रा हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर दे दियंतु टेलीविजन चैनल रिमोट रे कंट्रोल कर परिबा किंतु इंटरनेट रे कोन होउची इंटरनेट रे सब जिंस इंग्लिश रे अछि फोन रो इंटरफेस इंग्लिश रे अछि वेबसाइट इंग्लिश रे अछि एप्लीकेशन इंग्लिश रे अछि तो जो माने इंग्लिश जानि नाहंती से माने इंटरनेट टा को यूज केमति करिवे तो लैंग्वेज इक्वालिटी ऑन द इंटरनेट होची आमर कंपनी रो फोकस मु आपन को आउ गोटे बहुत बड़ सरप्राइजिंग जिनस कहबी किंतु सेटा इंडिया पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम जोटा आपन जानि परिबे कि इंग्लिश इंग्लिश हमको स्कूल रे पढ़ा होची अलग भाषा भी हमको स्कूल रे पढ़ा होची हमर बही अछि इंग्लिश रे अछि 26टा अल्फाबेट आपन जुआड़े दुनिया रे जीवे पचारिबे इंग्लिश रे केटा अल्फाबेट्स अछि से माने कहबे 26टा कीबोर्ड रे भी 26टा ही अल्फाबेट अछि कीबोर्ड रो स्टैंडर्ड अच्छी क्वेटी सेटा टाइपराइटर रे अच्छी कंप्यूटर रे अच्छी मोबाइल फोन रे भी अच्छी किंतु मुझे यदि आपन कहबे पचारिबी ओडिया रे केतरा कैरेक्टर अच्छी आपन कोन कहबे ओडिया रे बही रे एक्चुअली अच्छा इंग्लिश रो डिजिटल स्टैंडर्ड्स रे भी 26टा अल्फाबेट अच्छी किंतु ओडिया लैंग्वेज रो बही रे अच्छी 50टा कैरेक्टर किंतु तार डिजिटल स्टैंडर्ड्स रे अच्छी 80टा कैरेक्टर 80 कैरेक्टर्स तार कारण होची आम देशर आम भाषार डिजिटल स्टैंडर्ड गुड़ाक इंडिया रे डिफाइन होनी से गुड़ाक यूएस रे डिफाइन होची ताकू रिप्रेजेंट करचंती कंपनीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एडोबी एमाने आउ जो माने आमर भाषा को सेठी रिप्रेजेंट करूचंती से माने इंडियन लैंग्वेजेस रो नुआंसेस जानी नाहंती तो यही सब जदि फॉल्टी स्टैंडर्ड्स रहिबो ताले आमर भाषा केबे हेले भी इवॉल्व करि परिबोनी आउ इंग्लिश रो लेवल पर्यंत पहुंची परिबोनी आमे जेते चेष्टा करूचे एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल सब जिनस एबे एडवांस करने से सब जिनस इंडियन लैंग्वेज रे पॉसिबल हवनी जे पर्यंत एगुड़ाक फिक्स न होई तो से सब जिनस आम फिक्स करने चेष्टा करचु आम कंपनी थिला फर्स्ट कंपनी जोटा इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करला एंड्रॉइड रे 2011 रे थ्रू आवर पार्टनरशिप विथ क्वालकॉम आउ 2016 रे आम गवर्नमेंट संगे काम करिकी इंडिया रे मैंडेट करइलु कि जो मैन्युफैक्चरर्स से माने मोबाइल फोन बिक्री करेंगे इंडिया रे से आमर भाषार सपोर्ट डिस्प्ले आउ इनपुट सपोर्ट से थिबा दरकार गोटे छोट बैकग्राउंड आम कौन काम कर धन्यवाद थैंक यू अरविंद एंड I completely agree with you. Language has a lot of potential, and all the more if we have a platform
to be connecting through languages. We have a platform to be interacting with the people, and we have a platform to conduct our meetings. With this, I invite Alok to be speaking about the power of technology, the power of having connected, a medium, and please take us through good meetings. नमस्कार समस्ते मो ना आलोक मु कटक रे जन्म होइतली मोर बैकग्राउंड ओडिशा रे ही अछि मोर बापांकर पोस्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स रे थिला तो मु और छोटा स्कूल चेंज करची सो आई हैव सीन माने अनुगुल बरमपुर कटक भुवनेश्वर मु माने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कम एंड गो सो ओडिशा रे मोर रूट्स एस्टैब्लिश जोडा हैला I felt कि मैंने small town has obviously the potential to give you the big dreams. आपण big town रे आपण देखी थिवे बैंगलोर बॉम्बे ये सब जगह रे आपण कर potential is defined by say town रो जे successful लोग अछंती तो मो पई it was never like कि there was someone to look up to के mentor अच्छी तो success in a small town is defined, at least in Odisha, is a successful job, right? So that is how mane amaro choto bolu defined like pato pado bolo job karo and you will find your success. But mate setre kichi ote lacking sabale lagutila mate lagutila ki there is obviously nijer dream is not limited by defined by someone else. You have your own definition. So right after मैंने मोर कॉलेज मु गोटे कंपनी रे जॉइन करथली यूएस कंपनी रे मु रियलाइज कली इट इज लाइक गोटे बहुत बड़ चक्कर गोटे आपण बहुत छोटिया पीस से आपण से चक्क मूव भी कर परिवेनी आपण डायरेक्शन भी दे परिवेनी तो 2010 रे मु मोर फर्स्ट कंपनी आरंभ करथली एंड सेतळे बैंगलोर रे मु गोटे घर किनिया चेष्टा करथली से आई वाज completely duped मोर प्लॉट प्रॉपर्टी गोटे आई वाज ट्राइंग टू बाय एंड से बिल्डर ने की फेरा रह गले तो मते लगला कि देयर इज अ डिफरेंट वे टू डू इट एंड आमे सब बिल्डर मान को डायरेक्ट एग्रीगेट करी गोटे प्रॉपर्टी पोर्टल आरंभ करथलु दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी रियलिटी कंपास तो सेटा 2015 रे मु क्विकर जे माने इंडिया रो क्रेग्स लिस्ट से मान को सेल हेतला से कंपनी तापर मु सेठी क्विकर होम्स विली तांकर प्रोडक्ट तैयारी करथली पोस्ट कोविड आई थिंक आमे देखलु कि द सेल ऑफ एनीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन आपण एबे देखथिबे रियल एस्टेट हो इवन आपणकर कपड़ा हो सब किछि आपण ऑनलाइन किन परिवे बैंगलोर बड़ सिटीज रे 10 मिनिट्स टू कम रे हमको जरी न मिलना हमें रागी होछु so if that is the scenario केमिति लोक बिगी परिवे better online that is what good meetings हमर नुआ कंपनी रो आइडिया एंड हमें एआई या लैंग्वेज ऊपर हमें मीटिंग्स कंडक्ट हेल्प करू सेल्स वाला को to make at least 10 times better output and we have working with some of the top companies in India. Thank you, Alok. And we are glad that you saw that dream and you made a reality. You faced the challenges and you made sure every challenge brought a new perspective of growth and business. Now talking about challenge, Subrat, I would like to understand when you started, when you founded, and as you mentioned, you are from Jajpur. What has been the most difficult or most challenging situation throughout your entrepreneurial journey, and how have you been overcoming those challenging areas? I mean, it's not me. I think if you talk about the challenges, in this ecosystem, I think there are many challenges. First thing, coming from a not even middle class family, from a poor class family, and taking that plunge, and convincing myself and convincing my parents is the biggest challenge. I think now, I started my journey in 2014, right? So now things have been changed in the last 10 years, right?
startup as a keyword was not existed in the Indian dictionary, just for your information, right? And thankfully, now people relate what is startup, not because you're Shark Tank India, because of many initiatives. Even government has taken, state government has taken, center has taken. Society से change टा भी आसिलानी. But सेटा गोटे बड़ा challenge थिला मो पाई निजु convince करिया पाई, निज parents को convince करिया पाई, जे इटा मु जोड़ा करूची सेटा ठीक हवा कि नहीं. Because it's so uncertain, and your parents also don't want to look at you in a trouble, right? Because if you look at the statistics, out of 100, actually one startup will get succeed, right? 99 will fail, and failure reason भी गुड़ाई अच्छी. But first challenge सेटा थिला जे निजु को convince करिया और निज parents को convince करिया. Because ओडिशा छाड़ा माने इंडिया रो mindset हैला कौन माने risk taking mindset नहीं, right? अपन जितने पढ़ा सरीबो mostly समस्त भावंदी ओडे well settled job हो कि because India is a middle class economy, absolutely, right? Absolutely, Subrat. I would like to pass it on this question to Arvind, talking about mindset, and when you started having a dream, and that that's a lot of mindset change you have to do. So what kind of mindset you had, and if you have to take us back, आपण जब start करिथिले कोन भाबिले एते difficult challenging एटा हबो कि, so what kind of aptitude, what kind of mindset understanding that you had when you founded your business? मुझे दी गोटे वर्ड रे से माइंडसेट को समराइज करिवि सेटा होची डिस्कवरी माइंडसेट. Okay. तो मोर भाई मोठू गोटे वर्ष छोटो आमे सान बळू भाबितलु जे मिसिकी आमे किछि करिवु, तो से मो सांगरे को फाउंडर अछि. डिस्कवरी माइंडसेट माने कोन ता माने आमे जदि किछि गोटे भाबुचे कि आमे करिया पई चाहूचु, आमे पूरा एंड स्टेट टाको प्लान करिकिरी स्टार्ट करिया अपेक्षा करले सेटा हबनी. आमको फर्स्ट फ्यू स्टेप्स नबाउ पड़िबो कि जहाँ क्लैरिटी अच्छी फर्स्ट दुईटा तीनटा स्टेप आमको से फर्स्ट 2-3 स्टेप रु बाकी स्टेप्स पाई क्लैरिटी मिलिबो. दैट इज हाउ द एंटायर जर्नी विल बिल्ड, द स्टोरी विल बिल्ड. तो इट मे नॉट सो हैपन कि आमे जोड़ा आमे स्टार्टिंग रु जोड़ा भाभी थिलु आरंभ रु कि आमर एंड स्टेट एटा हबो, मे बी एंड स्टेट आउटकम अलगा हेई पारे. Absolutely. किंतु आमे जदी जर्नी रे स्टार्ट न करिबा आमे जानि भी पारिबानी हमको से क्वाडे सेटा नै कि आउची. So starting is very important with an open discovery mindset is what I will say. Thank you so much for that enlightening thought, and passing on to this question to you, Alok. Talking about the mindset, and also there's a lot of exposure that we don't have, and mo bhabe mindset ta ase when you have a lot of exposure and experience. And since we all of us come from a small town in Odisha, what according to you feel there's a lot of untapped opportunities in Odisha because you're in the business of technology, in connectivity? Can you please take us through? Yeah. Our first challenge, मुझे कहबी was hiring. आमे 6 months जाए wait कलु experience लोगों को hire करिया कोई we couldn't get. And I mean over a period of time मुझे learn करची we look for passionate, hungry individuals, and they are the people who will go beyond what a job entails them. तामाने मोडे उदाहरण दोची माने आमे remote work जतरा start हेतला आमे 2020 रे we had hardly 2 months of runway because आमरो investors माने they pulled out saying कि एबे pandemic आरंभ होए गला आमे किछि करि परियोनी. तो आम पाखे दीटा ऑप्शन थिला आमे टीम को डाकिलु, they are all sitting in a video call in some remote town in Odisha, and सेवन को पचालु कि कौन करिया. तो everyone said let's fight. तो सही attitude आपन को बड़ टाउन रे बहुत opportunity अछि, से माने switch करिवे. And I think that is what matters. तांको dream टा बड़ अछि in a small town, and they fought. I mean that's how we have raised even bigger money. आमे सतोडे बड़ MNC संगरे deal भी कलु, and in fact within 3 months we had more money than we had in the last year. Oh my goodness, that's really encouraging, Alok. That's how it worked. Great. And moving on to you, Subrat. Alok has given me some feeds to ask you some question. You worked outside Odisha. Ebe apan Odisha re kamo koruchanti. The challenges that he faced, the hunger for work, the passion. Do you still feel apan jebe start karithile viduli re when you're not there in Odisha working for Odisha, but now when with this mobility solutions,
You are now working in Odisha. How far has the gap been met, and what are you doing to bridge that gap? Definitely, when I started at age of 23 actually. I graduated in 21. I was the youngest product manager in India, back then. I was 22. And 22 age re, working as a product manager, and that company again got acquired by Flipkart. तापरे 23 बेलको मु डिसाइड करथिली जे मु करिवि निजे करिवि एंड obviously जेतेले when you start at so young age you don't have any liability मु जेतेले कॉलेज जाय मु जेतेले रूरल यूथ मैन सहित इंटरैक्ट करे मु सब बेले समस्त एनकरेज करे you start now this is the time कोन पाई ना you don't have family liability okay you don't have societal pressure okay and you don't have anything to lose. But now when I am 33, I'm starting again for the second time. I have a lot of pressure on my head. Pratham pressure hela, coming back as a second time entrepreneur, definitely I have to be succeed, right? I have no other options. But when I started a long time back, I had nothing to lose. Boss, fail hoba to hoba na. But now I have some pressure in my mind. Okay, I'm coming as an experienced guy. I have no option to fail, right? But obviously, hoba na hoba, who knows? Second, energy. When you talk about, me 10 years back when I was 23, the energy I see, settle me koi bin scale of 10, more energy not thila, ebe bodhe saath. Because that is, natural. You can't change that, right? But yes, say sob jinso mu dekhu ji changes. But obviously, you are an entrepreneur, you have to solve the problem, you have to, work for the customer, that's fine. But as I would quite conscious, I started in a metro city in Noida, and now I'm starting in a small town. And by the way, we run this company not in Bhubaneswar. We run this. We have two offices. One is in Jaspur and one is in Bhubaneswar. And what we do, we are building India's largest, online platform for commercial vehicle. Think about, if you heard about companies like Car Wale, Car Dekho, what they're doing for cars and bike. We are creating a platform where, consumers who is looking to buy any commercial vehicle, before they buy, they can come to the platform and do the research. That's really inspirational. And we're building it from Odisha. And there are challenges like talent, funding, etc., etc. We'll talk about a lot, in this session, but yes, challenges are there. Great, great. Thank you so much, for this enlightenment. That yes, as you rightly said, take risk, start now, and believe in yourself. And I think and these are essential, the prerequisites of an entrepreneur. Now coming to you, Arvind, if I may have to ask you, coming from small town, Apanankaro, what has been the biggest learning, the lesson, as we speak, Apanankaro, what has been the life mantra, and that you would really want to encourage all the aspiring small town entrepreneurs, promising entrepreneurs of Odisha? So I will extend what I mentioned about being in the discovery mode all the time. Mukai luck plays a very big role in anybody's life, and more so in the life of an entrepreneur. So आमे मु सानो बेले गोटे कोट सब बेले पढ़ी थिली आउ कहउथले जे success is 99% perspiration, 1% inspiration. मु टिके सेटा को चेंज करची मोर निजरो कोट बनैची. Success is also 99% luck and 1% perseverance to get lucky. मते बहुत लोग पचारंती जे how can you attribute 99% to luck and 1% to. So I'll just give you one small analogy. You'll be able to relate to that. आमे समस्ते ताश खेली छे, deck of cards. जदि आमे गोटे deck of cards नबा सेतरे 52 टा cards अछि. जदि आमे कहबा इक्का ace टा होची success, बाकी सब failure. आ आमे काहाकू जनकू blindfold कर दबा त कहबा you keep drawing cards. The person who has been blindfolded does not know that the deck has got 52 cards, doesn't know ace is success, ace is there or not, is asked to only pull cards. First 48 ta cards se pull karla pare, gote bistre ikka bhari bani, ace bhari bani. 48 card pull karla pare se chhadi dao. So that is success or failure. Thank you for sharing that thought, Arvind. That is success or failure. That is, a lot of people have told me that is failure. My answer to that one is that stopping at the 48th card is actually failure. Because after that, you have aces.
So discovery mode, the other thing that you mentioned about is, my mantra is that stay in the game. Because if you stay in the game, then you are giving yourself chance to get lucky. If you're out of the game, you can never be lucky. Alok, picking up that question from Arvind, do you believe in luck? Yeah, I think Arvind bhai is absolutely right. Luck ଆପଣଙ୍କର decide କରେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଲି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିବ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ହିଁ ପଳାଇଗଲା ତ ଲକ୍ ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ମାନେ ଇଫ୍ you are trying second time ଯେମିତି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ କହିଲେ there so you have more insights ଆପଣଙ୍କ you will automate more processes, you will hire a strong team, think global. So these things will be the 1% which will contribute to that. But yes, I mean, maybe, yeah, luck plays a very big part in making you successful. And undoubtedly, all of us are lucky then. I would like to think so. Well, thank you. Thank you so much for sharing your inspirations, sharing your challenges, sharing your beliefs, and coming from Jajpur, Bhadrak, Cuttack, and Bhubaneswar. We are working across the globe. We are putting Odisha to a kind of the places, the areas where we all aspire. And my best wishes are all with all of you, and looking forward to more interactive sessions in time to come.